Sir, R. Yes. Sir, R क्या हुआ? Resistant. Normal reaction. R is Normal. normal reaction. Okay, sir. Normal reaction is what? Whenever something we place on the table, so whatever the force, that table surface act on it, upward side, this is called normal reaction. Right, sir. Now, after that, the second law. What the second law says? Second law says F is equal to ma. Force is basically what? It is the product of mass and acceleration. Very basic definition of force. But we will apply this definition of force whenever we are talking about, or we will talk about that how the composite forces or multiple forces are there, right? Any question related to this? And third one, if an Nope, sir, object A, nothing. okay, if an object A exert a force on B, then object B must exert a force equal magnitude and opposite direction back on A. Every action there is an equal and opposite reaction, right? So this one will be what? This one is your action to reaction law of Newton's law of third law of motion. Any question about this? Let's suppose here is an object in which you can see some of the resistance and something are there. Calculate acceleration of the object. So here you can see we apply that resultant force is equal to 12,000 minus 6,000. Driving force क्या है? With the help of driving force this object. Let's suppose कि अगर कोई कार में से मान लो तो वो मूव कर रही है with 12,000 न्यूटन फोर्स. अपोजिट डायरेक्शन में क्या है तुम्हारे पास? अपोजिट डायरेक्शन पे रेजिस्टेंस है. एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है. टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 6,000 है. 6,000. तो वो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम रेजिस्टेंस फोर्स निकालेंगे 12,000 माइनस 6,000. तो 6,000 वो फोर्स है जो उस पे बेसिकली एक्ट कर रही है. ठीक है जी सर. And then after, what you will do? You will apply the formula F is equal to ma. Same. M is 8,000. You can see the object of this car or something is 8,000 kg. A, we don't know what is A, but we know that what is the force. That is 6,000. So 6,000 is equal to 8,000 times A. We can simplify. So we will find what is the expression. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस के लिए, जिससे तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगी. We have to find A whenever some driving force is there, some friction force is also there. Then how you can find the acceleration of that body, with what acceleration the body is moving. Okay. Right. I will share all these notes, so there is no need to write. Okay, sir. Similarly, the other example, this example is related with vertical motion. In this vertical motion, a man of mass 80 kg is standing in a lift. This man is standing in the lift having mass 80 kg. The lift is moving downwards with constant velocity. The lift is moving downside, right? Constant velocity R is equal to W. Whenever you use the word constant velocity, it means weight and normal reaction will be equal. Remember this point. Often this thing will be not given in your question. You have to consider this thing by yourself whenever this word is used, constant velocity. So R is equal to W. So R is equal to 80G N. Here Newton. 80G, G is gravity. W is what? What is the formula of weight? W is equal to mg. W is equal to mg, isn't it? So m is 80 and g, normally we can take 10 as or 9.8. So if I took 8, so it will be 800 Newton. So R is equal to 800 Newton will be there. Right? So R is what? R is also a type of force. So here two forces are present there. One force R and the second force is 80. And in this case, you can say lift is moving upward. Lift upward जा रही है. It means R will be more or W will be more. Yeah, what you will say? Sir, W will be more. W. And then what you say? Lift is moving upward. R is more or W is more? Sir, R. R will be more. क्योंकि देखो R Yes, sir. ज्यादा है जब ही तो ऊपर जा रही है लिफ्ट. अगर W Sir, ज्यादा I होता did तो not R hear लिफ्ट नीचे the. जाती.
So I did not hear the movement of the lift. Huh? I did not hear you say the movement of the lift. That's why I said W. It is mentioned in the question, my dear. Yeah. The Okay, lift my bad. is moving. There, that one. So here in this one, you will show what? It will depend on the question that what will be the situation when lift is moving upward and downward. Here he mentioned the lift is moving upward. That's why this case we are discussing Ishal Ali. Okay. So whenever you mention that in this case, the case 2, what we are discussing, the lift is moving upward. That was the point. I always suggest that read the question carefully as much as possible and then figure out whatever the correct situation for the question. It is very important to understand the question first. मैकेनिक्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योर मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है क्वेश्चन के लिए, ठीक है? Okay, then after that, with acceleration of 2 meter per second square, and we have discussed that r is greater than w in this case. Previous case में क्या था? R is equal to w था, but here is what? R is greater than w. And how you calculate r? R minus ATG. R क्या है आपके पास? Upward force. This ATG क्या है? This W. W is equal to, as I told, W is equal to mg. W का क्या formula होता है? W is equal to mg. M is here he mentioned the man, the lift weight of the man. This one is 80 kg. G is that. So we take it in the above example, above part. We consider that G value is 10, so it will be 80 times 10, 800. So R minus 800 is equal to 80 times 2. Why 80 times 2? 80 is what? Mass. And this 2 is Mass. what? Acceleration. What he mentioned this. Can you see this? This one is the acceleration. MA. So when you simplify this 80G, you will shift on the other side, you will get the value of R. You can take the screenshot of this one as well. So I will erase and move on to the next. Dian, you can take a screenshot and send it in the group. Umesh also there? Yes, sir. Okay. Done? Dian? Did I clear the drawing? Dian, I want your response. Yes, sir. I've sent it in the group. This is your responsibility. You will take the screenshot and then you will share in the group, right? Okay, sir. Now, another example. In this example, you can see two weights are there. Look at this example carefully. In this one, you have two weights. One weight is lying on the table. देखें 4 kg का weight है. Second weight is hanging. अब इस केस में हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी वर्टिकल, दूसरी पढ़ी हॉरिजेंटल. इस केस में आपके पास दोनों एग्जाम्पल वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल. ये 40 kg है. इसके ऊपर फोर्सेस क्या होती हैं? ये देखो यहाँ पर टेंशन है इस रस्सी में, इस डोरी में जिसके साथ ये बंधा हुआ है. एंड ऑन द अदर साइड 2 न्यूटन फोर्स जिसके साथ इसे यहाँ पर खींचा जा रहा है. जिस 2 न्यूटन फोर्स से आप खींच, यहाँ इसका वेट इस टेबल पे एक्ट कर रहा होगा और ये टेबल इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही होगी वो नॉर्मल रिएक्शन आर होगा. अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे तो मूव नहीं कर रहा. इट मींस आर इज इक्वल टू डब्ल्यू. ये एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर. दूसरी तरफ ये क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं. Two masses are connected by a light spring passing over a smooth pulley as shown below. Calculate the acceleration of the 4 kg block. The mass of this one is 4 kg. When released from rest, 5 kg block here in this one. 5g minus t is equal to 4a. 4 kg block, t minus 2 is equal to 4a. Two equations will be there at this side, right? So this one here you can see 4 kg block is here and this one is hanging with this 5 kg. So two cases are there. First case is for 1 kg. Second case is about 4 kg block. This one 5 kg block. If we talk about this 5 kg block, first case we are discussing here. So in this 5g minus t. 5g is what? 5g is the force which is moving at the weight. W is equal to वही बात दोबारा mg. M is what? 5
जी ग्रेविटी, जी को 10 ले लेता हूँ, चलो मैं दोबारा मैं 10 ही लेके कर रहा हूँ, ठीक है। एंड टी इज व्हाट, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ टी, तो द ओवरऑल इम्पैक्ट इज व्हाट 5g माइनस टी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 5a, 5 टाइम्स द एक्सीलरेशन। नाउ सेकंड बॉल इज 4g, 4 kg है आपके पास, दिस वन 4 kg में क्या क्या चीजें हैं, एट दिस साइड यू हैव फोर्स P, एट दिस साइड यू हैव फोर्स 2 न्यूटन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ, आगे की तरफ, यहाँ मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस हियर यू कैन फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस, so T minus 2 will be the difference. T right side force, 2 left side force. T minus 2 is equal to 4a. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4a। 4a में दोबारा बता दूं, 4a किस वजह से आ रहा है ma, याद है, अगेन एंड अगेन में रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ये जो चीज है ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है F, ये 5 है आपके पास m, और ये a है एक्सीलरेशन। तो हम उसी फार्मूले को F इज इक्वल टू ma को यूज कर रहे हैं, जो बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी मैग्नीट्यूड फोर्सेस की, कि लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स से आपको पता चलती है कि एक्टिव फोर्स कितनी है या इफेक्टिव फोर्स कितनी है, राइट। Then we will use these two equations like simultaneous equation, what we discussed in IGCSE. Remember, in IGCSE you have the equation in form of x and y, and here you have the equation in form of g and t. Simply, t will be cancelled. This calculation, the value of g is 10. T and a will be the considerable variables. So this one is in form of t and a in place of x and y. जब हम इसे simultaneously solve करेंगे, we will find the value of a as 5.22 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास एक प्री रिक्विजिट चीज आ गई, यू मस्ट हैव टू नो साइमल्टेनियस इक्वेशन। याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्या क्या मेथड थे उमेश, व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस? सर पहले इक्वेशन के अंदर y बना के अंदर सब्स्टिट्यूट टू इन सिर्फ प्लेस नाम ऑफ बता y। दो, ओनली द नेम, substitution method and elimination method, these two things were there, यस सर। okay। जी Now Dhyan, screenshot and share, Yes, sir. should I clear? तुम ओके Yes, बोलोगे sir. तो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ से। So you can also Okay, send sir. the recorded meeting. Right? Yeah, I am also recording, but as a notes I will share this, Understood, sir. right? Again, in form of the resultant force, how you can find the components of the resultant force. Here you can see F1 first force is given 2i plus j. This thing we discussed, I represent for x, j represent for y. F2 3i plus 4j, second force is there. F3 4i plus 6j, three forces are there. Act on a particle with mass 10 kg. Find the magnitude of acceleration. So first of all, you find what is the total force, F1 plus F2 plus F3. You will add all these forces. And what is the pattern to add? You will add I value with I values and J values with J values. So the sum of all the forces will be 3I minus J. This will be the magnitude or total effective force. Total effective force. How you will find the magnitude? You can know that magnitude can be represented in this form with these two lines. Right? This thing we have to find. But this one is total effective force, right? And again, we use the formula F is equal to ma. Effective force, this F you calculated. So here you write the value of F. Mass he mentioned 10 kg. Here is the mass 10 kg. So I put this 10 in place of M, and A acceleration is same it is. Now 3I minus J is equal to 10A. 10 is multiplying with A, so on the other side it will divide. So it will become 3 over 10I minus 1 over 10 J is equal to A. When you write in the decimal form, it will become A as 0.3I minus 0.1 J. This one is acceleration, not magnitude. ये acceleration है. Then after, when you have to find the magnitude or magnitude of the acceleration, what was the formula? Under root I square, or you can say x square plus y square, or you can say j square.
ij की फॉर्म में तो ij की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है. So you will put the value of x, yani I square 0.3 square. The value of j was negative. So you will write this negative sign inside the bracket. Remember that. Don't put this minus outside. Put this in the bracket and then put the square. One answer pura different ho jayega. Then you will find what is the value of a you have. So like this you can find the expression. Another case. Okay. Now Dhyan. Yes, sir. Done. Screenshot. Yes, sir. Done. Okay. So in this one, we discuss few of the different cases in which we discuss that whenever only horizontal, what are the three laws and how it will apply whenever vertical case. First one was that vertical case. Second one was the horizontal. First one horizontal, second one vertical, third combination, and fourth when only the forces are given. This one related with Newton's law of forces. Okay. Any question related with this? No, sir. Okay, another very important thing. This one is about distance, velocity, acceleration. But you know that distance, velocity, acceleration you will finding with the help of basic rules. And also you have studied this thing in your physics. Now with the help of differentiation and integration. Differentiation we have done in pure mathematics, but integration we have to start as the last chapter. So only I will give you the idea that how you can find the acceleration, velocity and displacement with the help of these two. Only you have to give the idea. Whenever we'll complete the integration, then after we'll do the reverse order of this. Whenever you have displacement, what's the that whenever you have displacement, how you can find the velocity with the help of displacement. When displacement is given and you will take the derivative of displacement. What I said, when you take the derivative of displacement, then you will find the velocity. It means from the displacement, if you want to find velocity, you have to differentiate. When you will differentiate once, you will get the velocity. Remember differentiation? Practice chaliye na pure mathematics hi. Ji, sir. Okay. And when you differentiate velocity, velocity को अगर आप differentiate करते हैं, then you will find acceleration. This is the rule. So what I said, displacement differentiate become velocity, velocity differentiate become acceleration. तो अब यहाँ पर आपके पास वो फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर वो कहेगा कैलकुलस के जरिए आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, then you have to differentiate. ये पॉइंट क्लियर है? सर फिर से बोल सकते हैं आप? If you have to find the velocity, you will differentiate the displacement, you will find the velocity. Understood. And when you have to find acceleration, you will find the differentiate velocity, you will find the acceleration. Okay, sir. This one is the hierarchy what I make with the red pen. Now, if you have acceleration given and he asks that you have to find velocity. Acceleration is given and you have to find what? Velocity. So how you can find velocity with the help of acceleration? You will integrate. Integration we will learn as the last topic of pure mathematics, but just keep in your mind that from acceleration to velocity what you have to do? Integration. And from velocity, if you want to find displacement, then you have to do what? Again, Integration. integration. तो पूरा एक ये cycle बन गया. If you want to do displacement to velocity, differentiation, velocity to acceleration, differentiation, and in the reverse order, integration. And you already know that integration is the reverse of differentiation. That's why I said practice the differentiation. If you are good in differentiation, integration will be easy for you. Right? Right, sir. Okay. Any question related with this? Nope. Okay. No, sir. Sir, also the formulas which are given on the sides, we have to learn that as well, right? This is the same thing. This is what differentiation displacement function is given R. Yeah.
whenever you differentiate r dr by dt, you can get velocity. Right. And Okay. velocity, when you get dv upon dt, differentiate velocity, you will find expression. Understood, sir. Similarly, here a function acceleration is given. When you integrate a, you will find velocity. When you integrate velocity, you will find r. This arrow sign shows that how you can go with this one. Here he also mentioned that r is what? Position or displacement here. Okay. Understood, sir. Okay. Dhyan, Yes, sir. done. Yes, sir. Okay. Here few of the key points are there, and then we will do a few questions. Read point number 1. Dhyan, first point. Area under a velocity time graph equals to displacement. एरिया अंडर द वेलोसिटी, ये तो आप लोग आईजीसीएससी से पढ़ के आ रहे हैं कि ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होता है कभी ट्रायंगल फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल में होता है, उसको जो आप निकाल लेते हैं, इट मींस दिस रिप्रेजेंट फॉर व्हाट? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. पॉइंट नंबर 2, अमित. Gradient at a point on position / time graph is equals to velocity. अगर हम लाइन का ग्रेडियंट निकालें पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है. पार्ट 3, उमेश. The gradient at the point on velocity over time graph is equals to acceleration. और अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ग्रेडियंट निकाल लें, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सीलरेशन. देखो अगर नोट्स के अंदर यहाँ दिखता है तो मैं तुमको वो चीज रिमाइंड भी करा दे. देखो ये था हमारे पास, याद है? जी sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो आपके पास लाइन आ रही है, इससे आपको पता चल रहा था कि इसकी वेलोसिटी कितनी है. इसी तरह ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हेन यू डू दिस वन, यू विल फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट. तो पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाज देयर. तो वही पॉइंट यहाँ पर बताए हैं. एंड देन आफ्टर ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा, इसके ऊपर ही 2 क्वेश्चन भी दिए हुए, हम डिफरेंशिएशन वाला कर लेते हैं. देखिए फंक्शन आपके पास दिया हुआ है r इज इक्वल टू, ये दे दिया मैंने, r इज इक्वल टू 12t माइनस टी स्क्वायर. जनाब ये दे दिया 12t माइनस टी स्क्वायर प्लस 3. ये आपको दे दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट मैंने. एंड आई आस्क्ड फाइंड वेलोसिटी. अब देखें वेलोसिटी के लिए जो आपने फार्मूले पढ़े थे उसमें तो कुछ तरह का काम ही नहीं था कि वेक्टर दे दी जाए तो कैसे निकालें. आप तो निकालते थे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम, इस तरह की चीजें कर करके निकालते थे. अब फंक्शन आपको पास दे दिया तो कैसे निकालेंगे? यू विल डिफरेंशिएट दिस r. ओके, व्हाट यू विल डू? यू विल राइट dr by dt. D और ये by किस पर डिपेंड कर dt. रहा है? Okay. t के ऊपर, क्योंकि ये x की जगह पर अब t है, यहाँ पर t पर डिपेंड कर रहा है. जी. 12t का डेरिवेटिव क्या होता है अमीर? 12. 12. इसका टाइम आ रहा है, उससे पहले खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी. और दूसरा माइनस टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ध्यान. T, sir. 2t. 2t प्लस 3 का डेरिवेटिव उमेश 0. 0. तो ओनली दिस फंक्शन इज देयर. तो ये आपने क्या निकाल लिया? dr by dt. यानी ये क्या आपके पास पता चल गई? वेलोसिटी आ गई. Velocity है. ये वेलोसिटी फंक्शन आ गया. अब अगर वो वेलोसिटी में आपको टाइम बता देता है कि बताएं 3 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, देन व्हाट यू विल डू? इन प्लेस ऑफ दिस t you will put 3 You will and you will write- find the yes. numerical value. This one is the Right, function sir. of velocity. Remember, this one is the Right, sir. function of Function velocity. of velocity. When he will mention the time कि बताओ 3 सेकंड बाद कितनी थी, 5 सेकंड बाद कितनी थी, तो वो टाइम आप यहाँ रखेंगे, आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी पता चल जाएगी. इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ भाई, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes sir, it's clear. आवाज नहीं है सबकी. v मैंने is बोला. given, v is equal to 12 minus 2t. Now we have to find acceleration. ये velocity given की हुई है, हमें acceleration निकालना है. Then what you will do? Derivative of velocity with respect to time, dv over dt. 12 का डेरिवेटिव क्या आएगा? Yes, Amit. What is the derivative of 12? Then it will be 12. It will be 0. 0.
एंड माइनस Right. 2t का डेरिवेटिव उमेश Two. सर -2 माइनस -2. 2। तो ये आपने निकाल लिया dv बाई dt, यानी दूसरे अल्फाज में आपने क्या निकाल लिया, ये ध्यान क्या चीज निकल के आई है? velocity. नहीं तो पहली थी अल्लाह के बंदे, वेलोसिटी को डेरिवेटिव करने के बाद भी अच्छा, वेलोसिटी। अच्छा। ये डिस्प्लेसमेंट है फिर। नहीं सर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है ध्यान, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो गिवन किया अच्छा, था उस बेचारे ने पहले ही। r that was अच्छा, displacement. When you differentiate you will get velocity, then again you differentiate you will find acceleration. ये तीनों दादा अब्बू हैं, ये इनके अब्बा जी हैं, ये इनके बेटे हैं, r b a, इस तरह की सीक्वेंस चल रही है, ठीक है? three yes generations. sir. Right. या 3 जनरेशन रही है, और इसी जनरेशन के अगर हम रिवर्स जाते हैं तो वो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे प्योर में, देन आफ्टर आई विल टेल। इज दिस वन Chapter क्लियर कि अगर Yes, डिस्प्लेसमेंट it's दी जाए तो clear. आप किस तरह से निकालते हैं? Yes sir. ओके, तो जनाब रियान साहब, Yes sir. take मैं a ले screenshot रहा हूँ. of this one. सर आपका दूसरा टैब. Okay, never mind. Hmm? Never mind. Never mind. ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जो आपके पास क्वेश्चन Yes आएंगे sir. ना, फिजिक्स में भी और मैकेनिक्स में भी, उसमें इस तरह से फंक्शन गिवन किए जाते हैं। हायर क्लासेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी जब आप पढ़ेंगे तो वेलोसिटीज इस तरह से दी जाती हैं, और इसी तरह से आपको फिर एक्सीलरेशन और ये चीजें कैलकुलेट करनी होती है, जैसे आगे के भी क्वेश्चन है ये। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हम स्टार्ट नहीं करें, अभी तक इसको यहीं तक रखें। ये हमारा तकरीबन एक चैप्टर का वर्क है। यहाँ मैं ये शेयर करूँ आपको, आप लोग ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं? No sir. No sir. अच्छा, कौन सी वाली बुक है आपकी? अच्छा, ये वाली है ना जो पीएससी वालों की है? Yeah, I guess. ओके, सर मिट्टी बनी हुई है. नहीं ये प्रीवियस वाली बुक थी। चलो इसमें से भी न्यूमेरिकल दे दूंगा फिर तुम लोगों को, टेस्ट इसी में से दूंगा फिर। ठीक है जी, तो इसको यहाँ तक ही रखें, इसको रिवाइज करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह भी आपको सेंड कर देता हूँ, वो आपको अटेम्प्ट जी करना है। सर. इसमें कोई चीज पूछना, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, देन प्लीज आप। Sure sir.